Yes, students are there. Good morning, sir. Very good morning. Good morning, sir. Very good morning. Very good morning. Good morning, sir. Very good morning लड़के. एक साथ आए हो, बाकी कहाँ हैं? सर सबको तो बता Inform दिया कर था. दिया था. के बाद एक दीपक प्लीज ऑनलाइन आ जाओ, आज प्रेजेंटेशन देना है, आज आखिरी दिन है. प्लीज आ जाओ, प्लीज अभी तुरंत. तुम पोस्ट नहीं देख रहे हो? कल भी तुम्हें फोन लगाया, तुम्हारा लगा नहीं. सबको बोला, तुम लोग ये व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करके उसका स्क्रीनशॉट मैंने मंगवाया. फोन तुम्हारा लगता नहीं है. आ जाओ सर, फटाफट आ जाओ, अभी प्रेजेंटेशन दे. अच्छा, और कौन कौन भाई? कोई स्टार्ट कर दो, फटाफट स्टार्ट कर दो. आज बहुत बहुत मेरे को बहुत सारा काम है रे. कोई स्टार्ट कर दो. Okay, sir. Then we'll start first. कौन कौन स्टार्ट कर रहा है? Sir, Nimish Maheshwari, Purvani Sengupta, and Harsh Tiwari. अच्छा, ठीक ठीक ठीक. तुम लोग का प्रोजेक्ट नंबर बताओ. Sir, project number 16 है sir. अच्छा, निमेश. प्रोजेक्ट नंबर 16. Yes, sir. 16 हो गया. 16 हो गया 20 तारीख को. और शुरू হয়ে গেছে? কিসে আমাকে লিংকটা কোথায় পাঠিয়েছে? কোথায় পাঠিয়েছে রে? দে দে দে. এই ইউটিউব কি? হ্যাঁ ইউটিউব হ্যাঁ যখনই কিছু ভরতে ঢুকতে বলবে আমাকে বলবে. আমি তো আজকে বসে যাবে. যেমন কিছু ভরতে বলবে না, একদম फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. हाँ भाई, अपने अपने स्क्रीन को शेयर करो. चलो फटाफट. फुल स्क्रीन कर लो, फुल स्क्रीन कर लो. निमिष बताओ. Good morning, everyone. Respected faculty members. राठी सर क्या बोल रहे हो? ये पूरा ग्रुप प्रेजेंट है ना? पूरा ग्रुप हो तुम लोग? कुर्बानी है, निमिष भी है, हर्ष का है. हाँ सर है. Sir, Harsh Tiwari. हर्ष भी है. ठीक. ठीक हाँ जी. है, स्टार्ट. Okay. Good morning, everyone. Respected faculty members and my dear colleagues. A very warm good morning to everyone. Today we are going to present our project presentation, यूट्यूब है. and my group members are Harsh Tiwari, myself Nimish Maheshwari, and Purvani Sengupta. So, what time is? Time is a browser extension. Time is a browser extension that can be enabled on any of the websites where you web browser or a Google Chrome browser.
And what it does, it can overlay over any website that restricts the time you spend on the website. ওই যে 1700 আছে The main feature of this extension is to increase the productivity. Nowadays, and our project was internet. The usage of internet is growing rapidly over the past years. So growing rapidly, and as you can see on the screen, there are nearly internet and other social media stuff, and they spend a huge amount daily on these websites. On the screen, there's a distribution chart of internet users in India 2016 and 2020. There are in 2016 there were approx 74% of users who were using internet below the age of 35, and there were 26% users that were using internet over the age of 35. And now this has the age has, although the number of people who are using internet below 35 is decreasing, but the users are increasing because awareness is also increasing. So adults above the age of 35 years are also increasing very rapidly. So what are the advantages of time? It is a productivity extension, as you can see. It helps you to stay focused on your personal stuff and your while you use so much of time on Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, and every other thing on the web browsers. So what it will do, it will restrict the time that you spend on the internet. So for the next part of the presentation, Good morning, sir. The tool used in the project is CSS, JavaScript, and JSON. HTML is hypertext markup language, which is a standard language for creating web pages. Also describe the CSS cascading style sheets. Actually, CSS is used for the layout, for taking care of the layout. Saves a lot of time, and it has a feature that it can control the multiple web pages at a time. JavaScript and program is a programming language that is used to tell the behavior of the web page. JavaScript it has the feature that mostly web pages are not only place where JavaScript have web desktops and servers program use JavaScript, and some databases like MongoDB and other also use JavaScript. Main features of the JavaScript are JavaScript can handle time and also help in detecting the user's browser. And then JSON is JavaScript object. JSON is a text, and JSON is mostly used. JSON is a script which is mostly used for storing and exchanging of data. We can easily convert JavaScript into JSON and send JSON to server, and we can convert any to JavaScript objects. Actually, the main reason to use JSON is can store the number of hours, the number of days, active days, and the blog websites. And the active website is the storing of blog website and active website. So this is the main reason of using a special feature of JSON in this. And JSON ability to it can store any blog it can store any web, it can store, and then it can convert into legal form, and then it can store in a file. And now I want to partner to explain the next part. Okay, sir. So this is Harsh Tiwari. So now I
would like to explain the next part, the interface one, which we are using in our file. So in this interface, we are basically limiting the time for which we can sites, or which we will use or we could say the blocked sites. Like in this interface, we are using 10 minutes per se. So we are blocking the sites for 10 minutes. So if we use the site for over like 30 minutes or 50 minutes, so it will block it directly. And interface. In the next interface, as we can see, the pop-up is appearing on the YouTube website. Like, okay, so it is showing that 10 minutes is remaining for you to use website of YouTube, and it will it using right now. It will block the website. So next oh, like how the extension works on Chrome web browser. So in this, we create a background of JSON, JavaScript, in which the pop-up of HTML will show up, and in the backend processing of pop-up.js will happen, and in which we will create some manifest on JSON file, which will interact with each other with HTML files and JavaScript files. Next. So now I'm concluding the whole thing. So the time is a web application which solves the today's problem which we are facing with social media. So younger generation cannot focus on like studies when they are using so much of the internet, like social media sites. These apps can look like timed. The application like Time can easily solve the problems of their family members, that they can restrict any website for their children to focus on their studies, and the parents can easily check histories of the application with them anytime they want. And so this is a very user friendly site for the children and the parents as well. So anybody who is encouraged their productivity can use this. Okay, thank you. Just show your report once. Show the report once. Report. Nimish, report. Okay, wait, sir. Share the report. चलो जल्दी जल्दी दिखाओ, यहाँ पे आंधी तूफान भयंकर आया हुआ है. Sir, I'm sharing the report. You can see on your screen. हाँ हाँ Is that Sir, is my report displayed on your screens? I have shared it. हाँ हाँ, we can see it. Yes. चलो नीचे चलो, धीरे धीरे चलो, फटाफट चलो, चलो चलो चलो. रिपोर्ट दिखा दो, इसके पहले ये प्रतिनिधि उड़ जाए. हाँ, राठी सर कुछ बोल रहे हैं, सुनो. मैं बोल रहा हूँ कि रिपोर्ट दिखा दो, इससे पहले कि एनर्जी उड़ जाए तूफान में. हाँ हाँ, अरे सर, मैं भयंकर आंधी तो मैं दिखा दूंगा अभी कुछ देर में ही. आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ बाहर की हालत क्या है. मैं सच में ये एक क्वेश्चन पूछेंगे कि जो ये फायरवॉल वगैरह यूज करते हैं और ये जो प्रोजेक्ट है, दोनों में क्या डिफरेंस है? फायरवॉल भी तो साइट को ब्लॉक कर देता है, उसमें टाइमर भी लगा सकते हैं. सर फायरवॉल नेटवर्क की चीज हो गई एक तरीके से, लेकिन सर ये एक एक्सटेंशन है जो क्रोम आप वेब ब्राउजर पे अप्लाई कर सकते हैं. जस्ट एक ओवरले हो गया वेब ब्राउजर का ये. थैंक यू. future as well as in the present. So इट्स ओके, थोड़ा और फास्ट चलो.
Good. Okay. कहीं कहीं पे स्पेसिंग ज्यादा है, कहीं कहीं पे कम है। हाँ, लाइन स्पेसिंग का थोड़ा गड़बड़ है भाई। हाँ, दो लाइनों के बीच की स्पेसिंग है वो कहीं पे 1.5 है, कहीं पे 1 कर रहा है, तो ठीक करना था। I can see that. I'm sorry, sir. हाँ, लाइन स्पेसिंग तो यहाँ पे 1 आ रही है, कहीं कहीं पे आपकी 2 आ रही है। वो 3.1.5 में लाइन स्पेसिंग Yes, 1 है, sir. देखो डिफरेंस दिख रहा है ना? Yes, sir. हाँ, तो इसको दूर करना। Yes, sir. चलो चलो चलो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। बाप रे, इसमें बहुत पेज चला गया है तुम लोग। ये कोड मत डालो इतना, केवल सूडो कोड या एल्गोरिथम यूज करो उसमें। हाँ, छोटा छोटा कोड डाल। Okay, sir. हाँ, इतना कोड मत डालो, ठीक है? एल्गोरिथम या फिर सूडो कोड, ये Okay, sir. कोड मत दो। इसको इतना का नाम क्या दिए होगे, इसको क्या दिए हो? Sir, time. Time. अच्छा अच्छा, ठीक। ये ब्लॉक साइट्स किस लिए है भाई? The block sites, if you want to block multiple sites. अच्छा, ये बीच में डबल कोट में किसने कहा है इसको? मतलब किसी बड़े आदमी ने कहा है क्या ये डबल कोट वाला? No. No, sir. वो same as quoted on the extension, तो वो हमने यहाँ पे represent किया है. ठीक 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 ठीक, चलो अब रेफरेंस दिखाओ जरा, रेफरेंस में क्या किए? ट्रोजन आ गया, ठीक है। फिजिक्स आ गया, ठीक। एक आध अच्छा सा रेफरेंस नहीं डाला रे? ओए, रिसर्च पेपर का सारा यूआरएल डाल दिया। एक आध ये डाल देना, रिसर्च बाकी रेफरेंस। sir actually, हाँ sir. हाँ, एक आध डाल देना, जब फाइनल वाला होगा ना उससे पहले इसको डाल देना, Yes, sir. ठीक है? Okay, sir. चलो, गुड, बढ़िया है। Yes, sir. जाओ, तीनों के Thank you, तीनों sir. थे ना? हाँ, तीनों के तीनों थे, ठीक है, गुड। अरे जावा स्क्रिप्ट, जावा की बुक के रेफरेंस डाल दो। हाँ, सोशल Okay, sir. साइंस के जो सर्वे होते हैं उनका रेफरेंस पेपर होगा, उनका डालो। Okay, sir. Okay, जो sir. सर्वे पेपर आते हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल इश्यूज के ऊपर, Yes, sir. अरे एक बार Yes, sir. में चले जा, 10 जर्नल्स के भी जाएगा, रेफरेंस तो डाल 2-4 डाल देना उसमें से बस। Okay, Okay, sir. sir. ठीक है, चलो। निमिष माहेश्वरी एंड गुड Yes, sir. हो चुका है। अब नेक्स्ट कौन आने वाला है? नेक्स्ट कौन, जल्दी करो। नेक्स्ट कौन, हाथ उठाओ। सर हाँ, सर अकेले दे दूं क्या? मतलब दोनों लोगों का थोड़ा नेटवर्क डाउन से चल रहा है। हाँ, चलो उसका डाउन है, तुम दे दो दे दो दे दो। लाठी सर दे दे क्या, ये अकेला ही दे दे अभी? विक्रम सिंह जैसे बात कर रहे हैं। हाँ ना ना, तो कौन देगा? तुम वो दोगे? विक्रम सिंह है। हम रेडी हैं। देगा। हाँ सर, हम रेडी हैं। अरे कोई ग्रुप पूरा प्रेजेंट हो उसकी लो पहले। तो ये दे दो, दीपक त्रिपाठी। यस सर। हाँ सर दे आप लोगों जो का ग्रुप पूरा है का ना? पूरा ग्रुप है कि नहीं दीपक? यस सर ग्रुप। हाँ सर। दे दो। नंबर 6 ओके। अरे थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, आज शाम को जेवीटी का वेबिनार है, उसमें के लिए डेटा नहीं बचेगा मेरे पास, अब अंधेरा हो जाएगा। थोड़ा जल्दी कर। Sir, can we leave? फटाफट करो, चलो।
Sir, Harsh, this is मैं Harsh. सबको Can we बच leave? नहीं, नो नो, Okay. लीव कोई नहीं करेगा, पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन बोले। हातिम। यस सर, बोला है स्टार्ट करूं? करूं स्टार्ट? अबे कितने अरे पूछे हाँ भाई भाई का सर बोल रहे हैं सारे पार्टनर तो ओके सर, गुड मॉर्निंग सर. हाँ हाँ Sir, our project is based on unstructured data without using SQL. Our team members are Deepak Tripathi, Harshit Lal, and me, myself, Hatim Sefi. The proud moment for us, sir, that our research paper is published in May 20, in January 2020, and we are working currently and working on that project. And our project is on about extracting the information from the unstructured text basis of related query fired by the user. The project is all about शेयरिंग पे कुछ नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे स्क्रीन तो शेयर करो कम से कम। कुछ तो शेयर कर आया ये तीनों के तीनों फोन पे हैं अभी इसी के चलते हो रहा है सर लैपटॉप कुछ अरे भुवन आ गया भुवन भी आ गया है लो हातिम दिख रहा? नहीं दिख तो कुछ नहीं दिख रहा. अरे लाड से शेयर करवा दे यार, नहीं हो रहा इधर का इंटरनेट कनेक्टिविटी लो. हाँ सर, लाड कर रहा हूँ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लाड मैं जब बह जाऊंगा पानी में आंधी में तब दिखाएगा क्या कुछ नहीं सर मैं दिखा रहा हूँ सर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर वो हो क्यों नहीं पा रहा है मैं तुम लोग सर, आप accept कर- कैमरा ऑन करके की क्या हालत है यार सभी स्क्रीन शेयर ही नहीं हो रहा हाँ दीपक का हो गया हो गया रे हो गया दीपक. हाँ हाँ चलो बोलो. ओके, पेज नंबर 4. स्लाइड शो अरे? भैया ये नीचे कैसे होगा? दीपक स्लाइड शो चालू कर दे या तो ऑटो रोटेट को ऑन करके और फोन को दीपक ऊपर सिंबल आ रहा है दीपक ऊपर सिंबल है प्रेजेंटेशन के जस्ट नीचे लिखा हुआ है देखे दीपक सुन पा रहे हो दीपक ऊपर सिंबल एक स्लाइड शो का अरे चलो हो गया. हाँ ओके. नंबर 4. Okay. That is all about system. Extract the information from the unstructured text on the basis of query fired by the user. The system is all about to respond to the query analyze the query, interpret its meaning, and then it responds according to it. It may also be possible that the system can answer either yes or no on the basis of query. For example, is it a sunny day asked by the user, so that the system will respond in correct way. It will not happen that system respond about a sunny day and all about another thing. So there is no string matching. It's a system which extracts information in a logical way in terms of what question is asked. About the queries so that we can so user can fire. First of all, there are 3 types of queries: structured, semi-structured, and unstructured. Nowadays we are working a lot of unstructured data. In daily basis we are working in unstructured data. Unstructured data is a data that which cannot organize in a predefined manner or does not have a predefined data model. It is not a good fit of mainstream relational database. So for unstructured data, there are alternative platforms for storing and managing. It is increasingly prevalent in IT system and is used by many organizations in this intelligence. For example, Word, PDF, text, media, images, which cannot
into structured or unstructured data. And the other query, second query, is semi-structured. Semi-structured data is informational that does not reside in a relational database system. Some organizational property that make it easier to analyze. With some process, you can store them in a relational database. Example of semi-structured is example of XML data. The other query is structured. In form of structured data. Structured data is whose elements are addressable for effective analysis. It has been organized into a formatted repository that is typically a database. It concerns all about which can be stored in database. The example of structured data is relational database. So the this thing is reference resolution model. This will be using in this project. Reference resolution model is which is all about which word or phrase refers to some other word or phrase. For example, it can shows which word is refers to other, like a pronoun. For example, if we take John like to play cricket, but he also plays football. A reference resolution model interpret and defines the John, like the text is he is referred to whom. The he refers to John is identify the reference resolution. The reference resolution model has two terms: cataphora resolution and anaphora resolution. And anaphora versus cataphora. And anaphora and cataphora slide. And anaphora is a word or another word or a phrase. For example, Mary thought that she lost her keys. In that example, she is referred to the Mary. She refers to Mary. So this is the example of anaphora. And the cataphora is a word or phrase that refers forward to another word or phrase. For example, the president of the cataphora. She was at NYU when Mary realized that she lost her key. Pronoun in English. There are different pronunciation in English, like for third person, first and second person pronoun. Third person, he, him, his, her. Like what is kind of referred to the text, which can define by the third person, and the first person and second person pronoun is like I, we, you, they, so that it can be identified the user or text that what kind of sentence it is refer about. So now here, my friend Harshal Lat will continue. Language modeling. Okay. Deepak, can you please move on the slides? Hello. Hello, Deepak. Hello. Sir, can you hear me? Banerjee, sir? Yes. Sir, Deepak is not moving the slides. Sir, basically in this we have to create the language. Slide नहीं चला रहा है. Sir, we have to deal with the language models in NLP. So, sir, the basic requirements of the language model that we required it to represent the text to form it understandable for the machine material. Sir, basically it is a statistically language model, and it is used to predict the next word in the sequence which are preceding it in the sequence. Sir, for example, if there is a sequence of length m, and we will assign it will assign a probability to the whole sequence that what should be the next word should be there. Sir, basically we have the probability distribution over the sequence of words to predict the next word. Then how we can create a language model? Firstly we will create a custom language model, then add corpus to a collection of written text, then add the words to the custom language model. Then we have to train the custom language model. After the training it, we can use it with the recognition request. Sir, basically we are using, there are different types of models, just like probability models, n-gram model, 1 gram, 2 and 1 gram models, 2 gram models. So probability model is a mathematical representation of random phenomenon, which is defined in defined by Sir, and our goal is to compute the probability
So basically, sir, we have to calculate the in a given sequence. So if there is a sequence of 20 words and we are calculating of the preceding, we are calculating the we have to go to back to the 20 probability will be 1 by 20. So it will be a big task for us. So we have different methods like chain rule and Markov assumption. Markov assumption is the basically the best method because it gives us freedom to predict the word from the last 10 words. Like chain rule, we have to calculate the joint probability. If there is an example that water is so transparent that then we have to predict the next word. So in this sentence, that our next predicted word will be the. But we can also calculate it by just picking the two words before it transparent that. So it will give the probability of 1 by 2. So there are basic formulas. Deepak, please move on the slides. Sir, in the Markov assumptions, we have the formulas to predict the next upcoming word in a simple manner. So there are different various methods also to calculate estimating the bigram probability. And there comes sir, and one more issue is there. We'll deal with it. The word sense disambiguation. Sir, in word sense disambiguation, like similar words can come across to us with the different meanings. Like sir, bank. If I'll tell I am at bank, then it means to the that I am dealing with the currency. But if I will say I am sitting near the river, near the bank of river Ganga, it means a different thing to it. So, which we are dealing with it. Now it's over to Deepak. Deepak slide चला ले भाई. Hello. Hello, Deepak. दीपक दीपक कहाँ हो भाई? अरे कहाँ चला गया है? भुवन Sir, let me call him. दीपक के नंबर काट लेंगे. हाँ. दीपक के नंबर काट देंगे, एकदम काट देंगे. दीपक कहीं चला गया था. अरे ये क्या हो गया? दीपक केयर तो कर रहा है. सर इसके बाद हम बोलेंगे सर ग्रुप नंबर 18 से. जिसको बोलो मैं बोलो. खुद मैं कॉल करता हूँ दीपक. दीपक को कॉल करो यार. क्या हो गया यार? आ चुका है शायद. कॉल आ गया. अबे यार भाई फोन काटो. हाँ, सब कुछ दिखा. हातिम का नंबर पब्लिक हो चुका है, प्राइवेसी लीक. क्या कर रहे हो सब? भाई फोन काटो यार. हाँ, वर्ड सेंस disambiguation has been done, Deepak. हाँ. हाँ बिल्कुल. हेलो दीपक.
आशीष भाई एक बार लास्ट में फिर से ट्राई कर लेना। ठीक ही तो है, थोड़ा थोड़ा बोलता चला जा भाई, बस हो गया, ठीक है। चलो सर, हाथ में से खत्म कर। सर ये आगे वाला पार्ट इसका था, ये बोल ही नहीं रहा है। अरे बोल, ये किसका पार्ट है, ये वाला मेथोडोलॉजी किसका है? दीपक 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 कुछ दीपक भाई। बोल। दीपक सर को कॉल करके सुना दे यार, ऐसे मत कर। दीपक दीपक मानेगा नहीं। हाँ दीपक, हेलो देखो बनर्जी, देखो दीपक, तुमने मान लिया, देखो। अरे यार दीपक तू यही बोल। दीपक आर यू देयर? स्पेलिंग तो सही लिखता, BNERGI रे। हाँ दीपक बोल बोल बोल। हाँ मोबाइल पे बोल, ये सुनाई पड़ रहा है, सब सुनाई पड़ रहा है, बोल। हाँ सब सुन रहे, सब सुन रहे, बोलो। बोल, सुनाई पड़ रहा है, बोलो। अब क्या रुके, आंधी तूफान में मर जाएं फिर क्या रुके, बता। बहते हुए भी बोलूंगा मैं, प्रेजेंटेशन ले रहा हूं। और हाथी में ये हाथ उठाने का कुछ भी नहीं है, आप हैंड को नीचे कर सकते हो। अच्छा, अब जब तुम यस यस। चलो कोई नहीं, बोलो बोलो बोलो। दिख रहा है सर आपको? कुछ नहीं दिख अरे हाँ भाई बोल। बोलो यार। मैं समझ, चलो बोल दो, थोड़ा थोड़ा बोल दो, फिर फिनिश करें, चलो। हम लोग कर क्या रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। तुम लोगों को सुनाई पड़ रहा है ना बाकी सारे के सारे? यस सर यस सर हाँ यस सर। सिर्फ थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा है सर। कोशिश कर रहे हैं। बोलो। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट में हम लोग कर क्या रहे हैं, अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट से हम लोग इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या किया कि हमने NLTK टूल किट यूज किया, नेचुरल लैंग्वेज टूल किट। क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगर, एनए सिस्टम या नेम एंटिटी रिकॉग्निशन और लेमेटाइजर यूज किया सर, वर्क को कंप्लीट करने के लिए। हेलो, हाँ सुनाई पड़ रहा है। इस प्रोजेक्ट में बेसिकली हम लोग यही कर रहे हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना। हाँ 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 ठीक है, बेसिकली हमने क्या किया था, पूरा कंप्लीट PDF को पैराग्राफ में ब्रेक किया। बस ठीक ठीक फिर ठीक। एक पैराग्राफ को हमने सेंटेंस में ब्रेक किया, फिर हर एक सेंटेंस को प्रोसेस किया और जो क्वेरी है उसको एक प्रोसेस किया, फिर दोनों का आउटपुट कंपेयर किया। अगर आउटपुट सेम आ रहा है तो उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा। अच्छा तुम लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो? हाँ सर। देख रहे हो बैकग्राउंड नॉइज का ग्राफ देख? यस सर। चलो अब हो गया। राठी सर कुछ पूछना है पूछ लीजिए सर, इनका कनेक्टिविटी में बहुत काफी इश्यूज आ रहे हैं। वर्ड प्रिडिक्टर जो है उसमें सपोज आपने लिखा दिस इज, तो कितने वर्ड मिनिमम रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन के लिए? सपोज आपने सेंटेंस लिखा दिस इज ए कैट, तो कितने वर्ड रिक्वायरमेंट है दिस स्पेस की, तो मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट होगी किसी वर्ड को प्रिडिक्ट करने की? सर बेसिकली एक सेट ऑफ कॉर्पस है हमारे पास पहले से ही जो सिस्टम में फीडेड है, बट ये वाले जिसके लिए हम लोग मार्कोव अजम्पशन यूज कर रहे हैं कि दिस इज अ कैट, दिस कैट इज, if we are talking about this cat is cute, if this is a statement, then we have to take the previous three words, this cat is, to predict the word cute. And but due to Markov assumption, if it is repetitively coming, then we can just then there is a then we will take cat is only with the previous two words if it is repetitively there, so which will increase the chances of and reduces the time.
ओके रिपोर्ट देख लो, रिपोर्ट दिखाओ। रिपोर्ट, है रिपोर्ट दिखा। हाँ सर, है सर, रिपोर्ट है। और जो फोन पे है वो लैपटॉप पे आने की कोशिश करें भाई। फोन पे प्रॉब्लम होती है शेयरिंग में और वॉइस में, तो जो उनकी प्रेजेंटेशन है उसमें कोई ना कोई एक लैपटॉप पे आए और उसको पीपीटी दिखाए तो इजीली शेयर हो एकदम जाए। हर को लैपटॉप में रहने की कोशिश करो भाई। मैं खुद आज फोन यूज कर रहा हूँ, तो देखो खुद प्रॉब्लम महसूस हो रही है। अरे मेरा तो एक फोन तो दम ही तोड़ दिया पिछले 3 महीने में बेचारा। अच्छा, जमीन तोड़ के सर तूफान से लिया। लैपटॉप भी कोरोना इन्फेक्शन चला सर। नाम मत ले अब प्लीज, कोरोना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब नाम मत लो। अब चिढ़ होने लगा है। अच्छा सर वो सब तो ठीक है, देख लेना सर। देख ही तो रहे हैं अब कुछ करने को तो रहा नहीं, सिर्फ देख ही रहे हैं। ये अरे किस पहले किस तो दिखा तो सही, पीपीटी दीपक की तेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? As per the latest video of Mr. Kerry Minati, cats are not cute. They fight over doing a duet in TikTok. Okay. या टिकटॉक। हाँ, यस। हेलो सर मैं भेज देता हूँ। नहीं, एक ही दिखा खोल के। नहीं, हो गया, हो रहा है भाई, स्क्रॉल कर ले। एक एक वो बस स्क्रॉल करते रहो, स्क्रॉल करते रहो। ए अभी बेकार की बातें मत करो, अभी इधर देखो स्क्रीन की तरफ, कैरी मिनाटी को छोड़ो अभी। ये बड़े बड़े पैराग्राफ यूज मत करो, ज्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ है तुम्हारे चैप्टर नंबर 1 में। हाँ ओके सर। चैप्टर 5 द्वारा नीचे से स्टार्ट है, इसकी एडिटिंग करो, ठीक से करो उसको। देख इसका नाम ही गायब हो गया आर्किटेक्चर का नीचे। हाँ, ये सब ठीक करो, एडिटिंग करो, उसकी फिगर के नाम प्रॉपर होने चाहिए, और ये लाइन ये पैराग्राफ ठीक करो। अभी जो चैप्टर कहाँ से स्टार्ट प्रेजेंटेशन होगा उसमें बहुत सब कुछ देखा जाएगा। ये चैप्टर नीचे से स्टार्ट हो रहा है, उसको पेज के ऊपर से स्टार्ट करो। ये फिगर का नाम नहीं लिख रखा क्या? फिगर का नाम देखो, लिखो नहीं लिखा तो। ओके सर। फिगर का नंबर लिखा है, मेरे को नाम तो नहीं लिखा उसका। देखो चैप्टर 9 ऊपर चला गया है। हाँ, इसको नीचे करो। ठीक है, नेक्स्ट कौन बोलेगा अभी? जो पूरा ग्रुप प्रेजेंट हो आ जाए। सर हम लोग हैं, हम भुवन और सर ग्रुप 18 सर। ग्रुप 18? यस सर। ग्रुप 18 में कौन कौन है? सर ग्रुप 8 सर शुभेन, हाँ सर शुभेन सिंह, सर शुभी भटनागर, जुनैद अहमद। चलो स्टार्ट करो, ग्रुप 18 फटाफट स्टार्ट करो। Good morning, sir. अरे गुड मॉर्निंग। Today, स्टार्ट करो। hello. टुडे एकदम Sir, am I audible? यस एकदम यू आर ऑडिबल। Good morning, sir. Good morning, sir. Today, I, Shubhi Bhatnagar, and my partner Shubhen Singh Chauhan and Junaid Ahmad are here to present our major project presentation on the topic real-time human heart surgery simulation in virtual reality. We have named our project as HERS VR. Collectively, HERS in German is known as heart, and VR stands for virtual reality. So, next slide. In simple terms, what we are trying to do is basically we have created a computer model of a physical system that can execute at the same rate as the actual wall clock.
with the help of virtual reality. Next slide. The tools and technologies that we have used here are Agora SDK, which is a WebRTC framework, Frame, which is a framework for virtual reality. For 3D modeling, we have used Blender, and for front end, we have used technologies like HTML, CSS, and JavaScript. Next. So we have basically used the concept of VR in our project. So I will explain a little bit about virtual reality now. We use computer technology to create a simulated environment in virtual reality. In simple words, virtual reality is an artificial environment that is created with the software and presents it in such a way that the user thinks it's real. And various applications of virtual reality are there in today's world. The next part will be explained by my partner. Good afternoon, sir. Sir, so the problem we are trying to solve here is that in a medical training, there are times when a surgery is performed by a senior surgeon, but only 4 to 5 junior surgeons can be accommodated in the single room. This can be time consuming as well as a costly process. So we have made a solution for this problem. We have developed a simulation of a human heart surgery in a virtual environment where a senior surgeon will host the surgery on our online platform, and it will be broadcasted and can be viewed by up to 10,000 number of users in real time. So this can be like cost beneficial, and junior surgeons can learn from sitting anywhere in the world. And the virtual reality market was around 27 billion US dollars in 2018, and it is expected to reach 815 billion US dollars in 2025. There are some virtual reality platforms that offer human heart surgery simulation, but they don't offer broadcasting, as well as limited to only few users. And currently it is a prototype, and we are still building the main product. Now I'll ask Junaid to take over. Good afternoon, sir. Now let's talk about the flow chart. Let's take an example of two users. One is host and the other is an attendee. First, we will take flow for host. Host will log into a platform. He will be prompted with an input field for unique ID for the session. After setting up a unique ID, he can create the session. Now, let's take flow for attendee or subscriber. Subscriber needs to enter that unique ID set up by the host to join the session. In the end, both will be on the same broadcasting channel and can start the simulation. Next slide. This is our login screen where the host can create a session by setting up a unique ID, and subscriber can join that session with unique ID generated by the host. Next. That's a prompt window where the host can choose which screen he wants to broadcast. Next. That's a session or simulation window where doctors or surgeons can perform surgery in real time. Next. That's a subscriber screen where attendees or subscribers can see the simulation in real time. Next. Collaboration with the medical sector or medical institutions. Next. Currently, we are building a cross-platform alpha version, and we do have a prototype of our product also. Next. Now Shubin. शुभेंद्र के लिए कुछ बचा ही नहीं, रेफरेंस पे आ चुके हो आप लोग. Yes, sir, that's all. Thank you. अरे एक आध रेफरेंस ढंग का भी तो डाल देता रे. सर रेफरेंस उसमें है सर, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सर. और यहाँ पे रख देता तो कुछ खर्चा हो जाता. सर डाल देंगे सर. प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाइए सर. जो अटेंडी अटेंड कर रहा है और जो प्रेजेंट कर रहा है उनके लिए क्या-क्या टूल्स की रिक्वायरमेंट है मीनिंग? सर टूल्स की कुछ नहीं, अभी फिलहाल तो सिर्फ वेब ब्राउजर होना कंपलसरी जो वेब आरटीसी फ्रेमवर्क सपोर्टेड हो.
तो सर जो होस्ट होगा उसको ब्राउजर से लॉगिन करना है और यूनिक सेशन नेम यूनिक सेशन नेम प्रोवाइड करना है। उसी यूनिक सेशन नेम को वो जब होस्ट शेयर करेगा तो उस यूनिक सेशन नेम के थ्रू अटेंडी ज्वाइन कर सकता है। हेलो चौहान ऑडिबल है तो ऑडिबल है, अगर स्क्रीन गई हो तो ला दे दोबारा आगे। ओके ओके जस्ट अ सेकंड। चौहान एग्जिट मत करियो, रूम लॉक है, फिर एंट्री नहीं मिलेगी। हाँ जस्ट एंट्री मिल जाएगा, मैं हूँ ना। अच्छा सर है, ओके। Hello, sir. Can you see the project report? Yes, I can see. Yes. चलो ठीक है, चलो बढ़ाओ बढ़ाओ। Sir, references. एक आध पेपर और बुक का भी डाल देना, ठीक है। Okay, sir. ठीक है, चलो जुनैद अहमद का ग्रुप का हो चुका है, ये जुनैद वाला ग्रुप है ना। हाँ चलो। अरे वीआर का रेफरेंस डाल दे, चैप्टर का, मेडिकल साइंस की जो हार्ट हाँ, बहुत सारा एक आध पर बैठ करके ये लोग कुछ डालता नहीं, इतना कुछ डालने को है रे। ठीक है, मेडिकल साइंस की बुक होगी, हार्ट डिजीज की, उसके ऊपर डाल देना। Okay, sir. चलो ठीक है, नेक्स्ट कॉल, नेक्स्ट पूरा ग्रुप जो। थैंक यू सर। कोई जाएगा नहीं, सब के सब यहीं पे रहो। ग्रुप नंबर 8। ग्रुप नंबर 8। यस सर। गौरव। यस सर। चलो जल्दी करो, बोलो। ओके सर, चैतन्य भुवन माइक अनम्यूट कर ले। ओके ठीक है। हेलो। हाँ भुवन। Hello. Morning, sir. Our project is about human brain tumor detection, and we'll be achieving it through the deep learning AIs and the convolution neural networks. Next slide.
The motivation of our project is that we must know that how important this problem is to the real world scenarios, and we have a few applications that could be very useful by this problem. That is in hospitals and automatically detect tumor tissues via MRI images, and similarly brain tumor segmentations via MRI images. The contents are objective introduction, methodology, user advantages, so on. Well, overview, our dataset contains two datasets, MRI images with and without a tumor. It contains 253 brain MRI images to train our dataset. And this contains 155 yes MRI images, that means the MRI images with the tumor, and 98 with no non-tumorous MRI images. The brain tumor is an abnormal mass of tissue in which cell grows and multiplies uncontrollably, seemingly unchecked by the mechanism that controls normal cells. This change detection process uses a novel score function based on Bhattacharya coefficient computed with gray level intensity histograms. Well, the algorithm we'll use will be followed. First, we'll take the MRI images as the input. Then we'll pass them through high pass filters and medium filters. High pass filters to highlight the high intensity part of the MRI, and medium filters to round the blurry images, but it does not make the images blurry. Then we'll go through the segmentation of the image, morphological operation, and tumor detection. Next is the use case diagram that will be given, and similarly an ER diagram for our procedure. Then we have a tentative model, which contains pre-processing that has a subpart of enhancement of the MRI image. Then skull stripping, which deals with the removal of skull, so we could get a better view for the tissues. And then it's segmentation, in which we separate the gray matter, white matter, and CSF and tumor. So this basically helps to differentiate between the different type of tissues in the brain cells. And then comes the morphological operation, and I'll take then it from here, feature Bhuvan. extraction. Bhuvan, so. Uh, Once we move on to the morphological extraction, morphological features, we start by stripping the skull because the skull is of no use for our tumor detection. Once we've stripped the skull of the images, we'll move on to segmentation. Now we'll divide the image into two parts, whereas where we compare the two halves to each other, and if any abnormality is detected, the tumor is highlighted. As you can see, this once we divided the skull into two parts, we did not need a test case we did not have any pre-trained example for this. We just divided the skull into two parts and just compared it with each other, and the tumor was detected because it is an abnormality in terms of the highlighted pixels. This technique is also used to detect edema region, where again the image is divided into two parts, and any abnormalities are highlighted, comparing it to each other, and there we have the edema region highlighted in the command window. Now, the advantages of using this left to right symmetry rather than a pointwise symmetry is that the left to right symmetry does not need pre-trained examples like a folder which has yes labeled tumor images and no labeled tumor images. We can directly compare it to to that individual image. The advantage is again no training data, exactly what I said. No image registration needed. You just need one single image and compare it to itself. Okay. Now the proposed method to our system is that we basically use k-means clustering. K-means clustering is something that we learned in the data science course, where
clustering. Yeah, the clustering process is that where we group similar points to each other and make clusters depending on the number of clusters that have been specified. Then we move on to optimized k-means, which is basically a way of refining our results over and over and over until we get a very specific area, because the tumor hold on, because the tumor can be very close to the skull, which can cause a lot of issues in the detection, as in it will confuse itself with the skull. So we'll repeatedly do the clustering process until we get a very specified area of the brain where the tumor is present. The morphological filtering methods that we'll use is dilation, erosion. That is, these are the two most fundamental methods in a morphological filtering. The clustering process. We'll have the final clusters, as in where the tumors are present, where the pixels of the tumors are present will be in one cluster, and that cluster will be highlighted in the image. See now, the first image shows the skull stripped image. The second. Chetan, I'll take it away from here only. Okay, you take it. Okay. A very good afternoon to all my colleagues and the respected faculty. I would love to thank Mr. Amit Rathi sir for being our project guide and mentor, and PS Banerjee sir for hosting and evaluating our project. My name is Gaurav Singh in Group 8, and I would be further explaining and concluding the project in front of all of you. There would be 4 concepts which have been used and been implemented in this project. The first portion being the image segmentation part of it. The second will be followed by morphological structures, then the detection model using the CNN in TensorFlow and Keras, and further the extraction features which will be used. I would be starting from the image segmentation portion in image processing and computer vision. Image segmentation is nothing but it is just a process of dividing images into various segments for analyzing and representation of data in a more meaningful and in easy manner. The clustering techniques which have been used, there would be k-means clustering and the c-means clustering, which would be further followed by an optimization technique of watershed algorithm and the genetic algorithm. The second portion would be morphological structures. Morphological structures is used for analyzing the geometrical structures given on a set theory or the random functions. Here, the random functions are being obtained from the k-means clustering and the c-means clustering. In morphological structures, we would be using the 2 concepts again, which is a derivative of the root source of images, that is erosion and the dilution process. The dilution is nothing but it is an adding and boundary of an object in the image, and erosion removes the same thing. The third portion is that here we would be using the SVM, that is support vector machine, which is again used for image classifications. Okay, so we'll start from the k-means clustering. The k-means clustering here, Chetan, slides 1 minute back kar de thodi si. The k-means clustering here helps in classification of the clusters on the 3 major portions of the MRI images. The first is the gray matter. The cluster 1 is gray matter. The cluster 2 is white matter, and the third is cerebrospinal fluid. The k-means clustering is further being globally segmented with the help of watershed algorithms, where we use for an image segmentation, so that if the tumor is only, or the edema or the fluid retention is only in a specific part of gray matter or white matter or the CSF portion, then it could be highlighted in a more broader way. But if c-means clustering is being used along with genetic algorithm, suppose that for a certain case, the tumor is not present in the gray matter or in the white matter, it is somewhere in the sharing portion between the gray matter in the white matter, then the c-means clustering algorithm is used, further followed by the genetic algorithm. Genetic algorithm is nothing but it is a sizable chromosome. It only enhances when the different size of tumors or the different size of region in the gray matter or the white matter is being covered. The major difference while choosing the 2 different clustering techniques like k-means and c-means clustering is the only one thing, that in k-means clustering, the tumor can only be detected if it is found in the cluster 1 of gray matter or the cluster 2 of white matter. But similarly, the advantage of using c-means clustering is that suppose that the intersection region of the cluster, that is gray matter and white matter, and the entity is found in both the regions depending upon the degree of involvement in the cluster, then c-means clustering is used, and further being followed by support vector machine for image classifications.
The last and utmost feature here, there are some images. Chaitanya, please show us the forward images of C-means clustering. Here, the morphological operations of erosion and dilution has been explained further, and these are the obtained images from the C-means and K-means clustering. There are further results of the same, of watershed algorithm and genetic algorithms, which is being used. Then we use an extraction feature. It is nothing but it is just a piece of information which we extract from the image, which acts as a starting point for computer vision algorithms, so that the redundancy in the data can be removed if any is found, like in the MRI images. I would like to conclude this thing. Chaitanya, सारी images एक बार दिखा दे जितनी operations को perform करके आती हैं. These are the images in which the C-means clustering and the K-means clustering, followed by the respective algorithms, have been used for image enhancements. And conclusions. The conclusion is very simple. That is the more better way and organized way of representing the tumor portion, and the best possible way is that to avoid the traffic which is being found in the hospitals. The expected outcome can be said that if we have a large sample of the data sets, the automatically indexing and the degree and stage of tumors can be predicted very easily. Coming back to the future scope and way forward of the project, I could only say that there is nothing like the revolutionary project we have created. Many of the projects have been going on in this industry on the same thing, but the start and end of any project is undecided. Like Orkut turns out to be a Facebook because we learned from the Orkut process. MSN turns out to be a Google because we learned from the same way. In the same way, the past observations have been made in these applications. We learned something. Further, there will again be some extractions of the project. The main objective of this project is only one thing, that in future, more better, more flexible, more reliable and profitable projects can be created and constructed, and deploying these projects in across platform web applications. Thank you, sir. That's all from our side as presentations. And in references, we have used some journals and books like Chaitanya, एक slide ऊपर कर दे. Yes, sir. Here. Okay. So we are done with the presentation. Fine, good. बहुत अच्छा है. और कोई देना चाहता है अभी? राठी सर चले गए क्या? हेलो सर. जो पूरा ग्रुप है उसको बुला लो. हाँ? जो पूरा ग्रुप प्रेजेंट नेक्स्ट उसकी करा दो फटाफट. रैट्स, आप मेरे को मेल भेजना है उनको आज शाम के वेबिनार के लिए. वो कम से कम उसको तो लाइव तो ये तो भेजो. आप इनको रात को बुला लेते हैं एक बार. कितने बच्चे हैं देखो सर. मैं ही बचा, एक ग्रुप बचा है. तो एक ग्रुप पूरा करो जो बचा हो तो. ना सुनो, टोटल ग्रुप हुआ है 1 2 3 4 5 6 ग्रुप हुआ है. मेरे अंडर 4 ग्रुप है, सर के अंडर 5 ग्रुप है, 11 ग्रुप है टोटल. तो अभी कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6 ही ग्रुप बोला है सर. 6 ग्रुप बोला है. मेरा आपका मिला करके 6 ग्रुप बोला है. तो हेलो आज लेनी है और हेलो सर, वो आदित्य प्रियम का कॉल है. हेलो जस्ट मोमेंट, जस्ट. हेलो हेलो राठी सर. हेलो या हेलो. बोलो. गर्वित किसके अंदर? मेरे अंदर, राठी सर के अंदर. अभी तो छोड़ ही दे, क्योंकि अभी हम लोग अब फिर नहीं ले रहे. शाम के वक्त हम लोग फिर पुटअप करते हैं अराउंड 8 बजे. लेकिन आज रात को 8 बजे पक्का रहना, समझे? वरना कल अजय सर मांगेंगे तब एब्सेंट करना पड़ जाएगा, और ये इसको साथ में इसका रिकॉर्डिंग भेजना पड़ता है. पक्का. ये गर्वित वाला ग्रुप रात को देगा तो रात में भी 4-5 ग्रुप और देना पड़ेगा. 4 ग्रुप और देगा कम से कम. ठीक है. अरे अच्छा, तू अकेला ही है? ठीक है, अकेला दे देना यार. ठीक है. राठी सर कोई है? Yes, sir. हाँ. ये अब आप क्या करना है बताओ. अब क्या करना है? अब इसको बंद करें? शाम को फिर मिलते हैं 7 बजे. सर 7 नहीं 8 सर, बजे. एक क्वेश्चन था सर. हाँ सर, सब प्रेजेंट रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं. क्वेश्चन था सर. हाँ बोलो. सर
नहीं पर सर ये हम लोग की लास्ट प्रेजेंटेशन है, इसके बाद होगा? इसके बाद जून में फिर एक प्रेजेंटेशन होगा, लेकिन ये तुम्हारा एक एवेल्युएशन है, इसका मार्क्स जाएगा और इसका मार्क्स कल सुबह तक भेजना पड़ेगा हमें, मुझे और राठी सर को बना करके भेजना है, उसीलिए आज रात को फिर एक बार 8 बजे आ जाना समझे। सर हम लोग तो दे चुके हैं सर, हम लोग को फिर से आना पड़ेगा? ना तुम लोग नहीं भाई, सुन लो, अभी ग्रुप नंबर 7, 19, 16, 6, 18 और 8 ये ग्रुप नंबर दिया है, बाकी मेरे और राठी सर के जो बचे हुए ग्रुप है वो शाम को 8 बजे आ रहा है। ठीक है, मैंने तुम लोगों के फेसबुक ग्रुप में पोस्ट कर दिया है, वहां जाकर के मेरा राठी सर का लिस्ट देखो, जो बचा हुआ है वो आएगा। कोई ऐसा है जिसका अभी तक 19 लोगों में से जो भी यहाँ पर है ऑनलाइन? यस सर। किसका नहीं हुआ है? सर मेरा नहीं हुआ है। अक्षित शर्मा। कौन नाम बता भाई? अक्षित शर्मा। अच्छा अक्षित, तुम लोग एक काम करो, रात को दे दो, शाम को 8 बजे दे दो। हाँ सर ठीक है। हमारा टर्न इंडस्ट्री है। राठी सर मीटिंग मत करें। राठी सर चालू करेंगे मेरे को बता देना, मैं आ जाऊंगा। हाँ ठीक सर, ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, बाय। बाय सर। बाय। टेक केयर सर। बाय, you too। Thank you, sir. Thank you sir।